हेलो माय डियर स्टूडेंट गोटे नुआ वीडियो लेक्चर फ्रेंड अगेन आप समस्त वेलकम करुच्ची। तो फ्रेंड MCQ प्रैक्टिस सेशन 3 रे आज आसिक आम पहुँचे। तो आउ किसी फ्रेंड बेसिक डेटा इंजीनियर क्वेश्चन कलेक्शन मो पाखे अच्छी सेटा मुझे आप सहित शेयर करी। तो फ्रेंड आज फर्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर रेटिंग्स आर गिवन इन डेक्स। तो फ्रेंड मोर समस्त स्टूडेंट यार आंसर इजिली करेंगे। एक क्वेश्चन फ्रेंड ATO 2024 क्वेश्चन HP हॉर्स पावर किलो VAR किलोवाट kilovolt ampere आम समस्त जानी फ्रेंड आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी दैट इज द किलोवोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग फ्रेंड किलोवोल्ट एम्पियर रे दिया जाए किलोवाट रे फ्रेंड दिया न जाए मन रखिए बिकॉज वी कैन मेजर द आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस इन द टर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो से कॉन्सेप्ट अनुसार फ्रेंड ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज KVA और कॉल्ड किलोवोल्ट एम्पियर करेक्ट। ओके सो लेट मी फ्रेंड टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 25 ohm resistance has a voltage of V is equal to 150 sin 377 t. What will be the average power over one cycle? Okay. अब कौन दे डाटा लेट मी राइट इन डाउन फॉर यू। रेजिस्टेंस दे दीजिए फ्रेंड 25 ohm, वोल्टेज रो इक्वेशन दे दीजिए फ्रेंड 150 sin 377 t. Now friend for AC supply we write V is equal to Vm sin ओमेगा टी। तो जदि फ्रेंड कंपेयर करवा एठू Vm रो वैल्यू फ्रेंड केते देछि 150 आ ओमेगा रो वैल्यू केते देछि फ्रेंड 377। एति क्लियर फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड Vm रो मूल्य अछि R रो मूल्य अछि मु Im रो मूल्य बाहर करि परिबि कि दिस इज इक्वल्स टू Vm डिवाइडेड बाय R। तो मैक्सिमम वोल्टेज होछि फ्रेंड 150, रेजिस्टेंस होछि 25 5 रे काटि देबा फ्रेंड दिस विल बी 30 डिवाइड बाय 5 एंड अगेन फ्रेंड दिस विल बी 6 एम्पियर्स। तो फ्रेंड करंट रो मूल्य बाहर गला 6, वोल्टेज रो मूल्य फ्रेंड ऑलरेडी देछु 105। लेट अस पावर द एवरेज पावर व्हिच इज इक्वल्स टू Vm into Im divided by 2। मैक्सिमम वोल्टेज into मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम वोल्टेज दे देछि फ्रेंड 150, करंट आम बाहर कले 6 एम्पियर डिवाइड बाय 2। 2 काटि देबा फ्रेंड 3 साइंज रे 15 into 3 हेले 450 वाट। दिस इज योर फ्रेंड करेक्ट आंसर। ओके तो फ्रेंड रजिस्टर अच्छी डायरेक्टली Im Vm by R फॉर्मूला आप पुट करेंगे कारण ओनली फ्रेंड रजिस्टर जगह अच्छी। फ्रेंड किसी स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हे जे सर एवरेज पावर ओवर वन साइकिल दे यार आंसर 0 हम। फ्रेंड आंसर 0 होता जदि से आमको इंडक्टर और कैपेसिटर दे था कारण फ्रेंड इंडक्टर कैपेसिटर जो डेरिवेशन करते हैं देखिए जे एवरेज पावर कंजप्शन इज 0 फॉर द इंडक्टर सर्किट एंड ऑल्सो फॉर द कैपेसिटर सर्किट। ओनली फ्रेंड रजिस्टर क्षेत्र में ही आम एवरेज पावर कैलकुलेट करूँ। तेणु मन रखे फ्रेंड जदि कैपेसिटर और इंडक्टर देता देन एवरेज पावर ओवर वन साइकिल विल बी 0, टोटल पावर कंजप्शन विल बी 0, बट फॉर द रजिस्टर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। Clear friends? Okay. So let me take you to the next question. Then friend another question. Kirchhoff's law are applicable to. तो friend Kirchhoff's law हमें कोठी कोठी व्यवहार करि परिबा टू AC वोल्टेज ओनली AC रे खाली व्यवहार करि परिबा, टू DC एंड AC वोल्टेज रे खाली व्यवहार करि परिबा, टू AC वोल्टेज एंड DC करंट रे व्यवहार करि परिबा, बोथ DC एंड AC वोल्टेज एंड करंट रे व्यवहार करि परिबा। तो फ्रेंड यार आंसर भी मोर समस्त स्टूडेंट माने जानि थिबे। तो किर्चॉफ्स लॉ फ्रेंड AC और DC बोथ रे फ्रेंड आम व्यवहार करें से AC करंट हो कि DC करंट हो। आप निजे भी देखुए फ्रेंड जिते आम AC पढ़ुले सेठी भी किर्चॉफ्स लॉ व्यवहार कले, जिते फ्रेंड आम DC सीरीज मोटर जनरेटर पढ़ले सेठी भी फ्रेंड आम किर्चॉफ्स लॉ व्यवहार कले। तो फ्रेंड ये आंसर है जो आपनकर D। सो किर्चॉफ्स लॉ एप्लीकेबल टू बोथ DC एंड AC वोल्टेज और करंट। वोल्टेज हो कि करंट हो फ्रेंड DC और AC बोथ रे आपन किर्चॉफ्स लॉ को व्यवहार करि परिबे राइट। ओके तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन डेक्स इज द पावर डेवलप्ड इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो से कौन फ्रेंड जति गोटे इंडक्टिव कॉइल आम सर्किट रे अच्छी तो फ्रेंड आम जाने इंडक्टर आमको कौ रिएक्टेंस दे ताको आम इंडक्टिव रिएक्टेंस अथवा XL बोलिकी कहूचे। से कौन प्योरली इंडक्टिव सर्किट फ्रेंड कौ पावर देखा मिले। ओके एपरेंट पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर और रिएक्टिव पावर। ओके जदि फ्रेंड आपनकर मन थी एवरेज पावर ओवर वन साइकिल ऑफ द इंडक्टर सर्किट 0 होता है फ्रेंड एवं जस्ट आम डिस्कस कले। तो फ्रेंड एवरेज पावर केबे भी हम ही ना, बाकी फ्रेंड बंचला एपरेंट पावर,
ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर आम जान फ्रेंड ट्रू पावर फॉर्मूला इज v इंटू आई तो आम पढ़ी फ्रेंड vi आउ गए आम फ्रेंड पढ़ी vi इंटू cos फाइ जो जगह cos फाइ हूँ फ्रेंड पावर फैक्टर आउ गए फ्रेंड पढ़ी vi इंटू sin फाइ तो फ्रेंड जो पावर फैक्टर थाए दैट इज आवर ट्रू पावर टीपी बोली फ्रेंड लिखी दूसरी एंड दिस इज sin फाइ इज योर रिएक्टिव पावर एंड vi इज नोन इज योर एपारेंट पावर फ्रेंड विथ फॉर्मूला मन रखिए कारण कोटा भी क्वेश्चन पचारि दे पारे किंतु फ्रेंड ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली आमको पचारि जे गोटे इंडक्टिव रिएक्टेंस रे को पावर देखा मिले तो आम तो जानी एवरेज पावर इज 0 ओवर द कंजम्पशन नाउ ड्यूरिंग द एनालिसिस जिते फ्रेंड डेरिवेशन आम करते फ्रेंड आम देखी इन इंडक्टिव सर्किट वी आर गेटिंग द रिएक्टिव पावर दैट इज vi sin फाइ तो फ्रेंड ये जगह मोर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर सो फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट वी आर गेटिंग द रिएक्टिव पावर क्लियर फ्रेंड दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन ATO 2021 नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आप the speed of DC motor is dex proportional to the applied voltage or back EMF and it is dex proportional to the flux per pole से कहला फ्रेंड गोटे डीसी जनरेटर स्पीड कथा आम देखा से बैक EMF सहित तार रिलेशन कौन अच्छी प्लस तार फ्लक्स सहित आम कौन रिलेशन अच्छी ओके तो यहाँ फ्रेंड निहाती इजी आम समझते जानी फ्रेंड तो स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन is directly proportional to EB divided by phi जो जगह EB माने होची फ्रेंड हमारा बैक EMF phi माने होची फ्रेंड फ्लक्स पर पोल तो फ्रेंड फ्रॉम दिस रिलेशन हम कहि परबा जे द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लक्स संगे फ्रेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जदि अलग अलग फ्रेंड लिखबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB and is inversely proportional to flux per pole तो फ्रेंड हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी तो फ्रेंड वोल्टेज सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किंतु फ्लक्स सहित फ्रेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रो कांसेप्ट अनुसार फ्रेंड ये जो आम ऑप्शन अच्छी फ्रेंड चार्टा कोटा करेक्ट फर्स्ट कहला फ्रेंड रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर ओके सेकंड फ्रेंड क्वेश्चन कहला डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नहीं नेक्स्ट फ्रेंड कहला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर फोर्थ फ्रेंड कहला इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल रो नेचर ऊपर डिपेंड करे ओके तो फ्रेंड ऑप्शन देखिले आसंत फ्रेंड आम डिस्कस करबा ए विषय रे तो फ्रेंड वी नो द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो इंटू L डिवाइडेड बाय A आउ गोटे फॉर्मूला में पढ़ी R इज इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T तो ये दुटा इक्वेशन आम कौन देखिले फ्रेंड जे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया पर सेक्शन एंड रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर किंतु फ्रेंड ऑप्शन में मते कहि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो यहाँ भी ट्रू नुह ऑप्शन में फ्रेंड देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर बट यहाँ भी सत नुह फ्रेंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया पर सेक्शन तापर देखिए मैंने रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही किंतु फ्रेंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी रेजिस्टेंस टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड करे तो फ्रेंड तीनटा ऑप्शन भूल होगा तो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल तो मटेरियल रो नेचर ऊपर फ्रेंड आमर रेजिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड करे थाए ओके फ्रेंड तो फ्रेंड ये साइड रही है तो ये फ्रेंड देखिले आमर ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर ओके तो ये फ्रेंड टिक मार्क ऑलरेडी कर देछि इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड ए कंपाउंड जनरेटर कंसिस्ट ऑफ वेरी बहुत सहज क्वेश्चन समस्ते आम आंसर दे परिबा कंपाउंड जनरेटर रे केतेटा वाइंडिंग थाए से कहूँ गोटे फील्ड वाइंडिंग थाए तीनटा फील्ड वाइंडिंग थाए दीटा फील्ड वाइंड थाए कि चारटा फील्ड वाइंड थाए आम समझते जानी कंपाउंड जनरेटर मीन्स मोर देन वन फील्ड वाइंडिंग तो फ्रेंड कंपाउंड जनरेटर कौन थाए गोटे फील्ड वाइंडिंग सीरीज सहित कनेक्ट थाए आ गोटे फील्ड वाइंडिंग फ्रेंड आमर आर्मेचर सहित कनेक्ट थाए सो वी हैव टू फील्ड वाइंडिंग
गोटे फ्रेंड आर्मेचर सहित सीरीज रे कनेक्टेड होता है आ गोटे फ्रेंड आर्मेचर सहित पैरेलल रे कनेक्ट होता है सो फ्रेंड माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज हैविंग टू फील्ड वाइंडिंग क्लियर फ्रेंड्स दिस इज आल्सो आस्क्ड इन द ATO 2021 एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड now friend next dela a capacitive reactance of 4 watt is connected in series with a resistance of 3 watt okay तो गोटे कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रेंड अछि 4 watt तो फ्रेंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम कोन लिखु XC रो मूल्य दे दी फ्रेंड 4 watt is connected to a series with a resistance of 3 watt so R is equals to friend दे देला 3 watt the series circuit is connected to 200 volt मु लिखि पारे फ्रेंड V is equals to 200 volt frequency friend दे दी 50 hertz supply what is the value of the impedance okay जोटा कि हमें Z बोली कि लिखो फ्रेंड ऑलरेडी हमें जानि छै विषय रे तो फ्रेंड Z माने कोन वी नो सो Z माने impedance of the total जहाँ भी फ्रेंड रेजिस्टर कैपेसिटर रही थे एटी फ्रेंड कौन अच्छी गोटे कैपेसिटर अच्छी आ गोटे रेजिस्टर अच्छी सो कैन आई राइट Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ XC रो स्क्वायर प्लस R रो स्क्वायर क्लियर फ्रेंड सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर XC रो मूल्य केते अछि फ्रेंड 4 रो स्क्वायर रेजिस्टेंस रो मूल्य केते अछि फ्रेंड 3 रो स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 3 square is 9 this is equal to root over of 25 from this can I write friend Z is equals to 5 watt okay तो friend हमारा Z is equal to केते बाहरला 5 watt so option C is your friend correct answer okay friend so this is also asked in the ATO 2021 exam okay so friend let me take you to the next page now friend next question what is the velocity of charge leading 1 ampere current which flows in a copper conductor of cross section 1 centimeter square and length of 10 kilometers free electron density of the copper is 8.5 into 10 to the 28 per millimeter cube okay so friend asan dekha kon kon dei friend current ro mulya friend dei dei I that is equals to 1 ampere flows through a cross-sectional area of the conductor let's A दे दीजिए फ्रेंड 1 centimeter square length of the conductor दे दीजिए फ्रेंड 10 kilometers तो फ्रेंड किलोमीटर दे दीजिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर मीटर 1 2 3 4 ओके आउ कोन दीजिए डेंसिटी ऑफ द कॉपर दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मीन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रेंड हमको दे दीजिए 8.5 into 10 to the power 28 okay तो इतनी जिनस फ्रेंड हम पाखरे गिवन अछि से हमको जे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज VQ रो मूल्य केते नाउ फ्रेंड ए विषय तो हमें किछि भी हम क्लास डिस्कस करने हम खाली इतनी डिस्कस करते फ्रेंड चार्ज Q is equal to n into E n is the number of electron divided by charge of the electron now using this concept there is a formula so the current I is equals to friend mone rakhibe n into E into A into P तो स्टार मार्क रखुची फ्रेंड नॉट इन द सिलेबस बट मे बी फ्रेंड क्वेश्चन आस्ट फ्रॉम जेहेतु फ्रेंड एटीओ एग्जाम रे पढ़ी तो मे फ्रेंड चांस होची पढ़िबार खाली फॉर्मूला को फ्रेंड मने रखिथिबे I is equal to QAV Q माने होची एनी फ्रेंड तो Q जगह रे पुट कली NE now from this equation friend V is equal to कहते हैं I divided by N into E into A हाँ ना फ्रेंड अच्छा I रो मूल्य कहते दीजिए फ्रेंड 1 एम्पियर N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते दीजिए फ्रेंड 8.5 into 10 to the power 28 multiplied by E माने हो जे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रेंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हुए फ्रेंड 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम हाँ ना नहीं multiplied by area of cross section area कहते दीजिए फ्रेंड 1 centimeter square जल्दी आगे मीटर रे करिया फ्रेंड 1 into 10 to the power minus 4 meter square ओके तो एटा को फ्रेंड कैलकुलेशन करिवे फाइनली फ्रेंड v रो आंसर आपनकर आसीबो 0.735 ओके दिस इज योर फ्रेंड आंसर
तो फ्रेंड डाटा अनुसार तो क्वेश्चन बहुत लेंदी अच्छी बट से मोर एम नुह मोर एम हूँ यही फर्मुलाटा आपको बतेवा ओके मन रखे फ्रेंड जब चार्ज करेन्ट कथा से कही कि वेलोसिटी बाहर कर फर्मुला आई इज इक्वल्स टू एन इंटू ई एन ई जगह फ्रेंड क्यू बोली भी लिखिपारे ए इंटू भी ए माने एरिया पर्सन कंडक्टर क्यू माने है चार्ज भी माने होचे वेलोसिटी ओके ना let me take you to friend another important problem. A 220 volt 50 hertz series RC circuit. तो फ्रेंड गोटे रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट अच्छी जो मैंने सीरीज रे कनेक्टेड अच्छी देयर इज कनेक्टेड टू 220 volt 50 hertz टेक्स एन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 10 एम्पियर. तो आई आरएमएस रो मूल्य फ्रेंड देछि 10 एम्पियर. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट अकर करंट रो फ्रेंड मैक्सिमम वैल्यू हबो केते बेले 1/900 सेकेंड बिफोर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. तो फ्रेंड 1/900 सेकेंड पूर्वर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आगु हबो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर. तो एवरेज पावर मूल्य केते हो फ्रेंड से मते क्वेश्चन रे पचारि ओके. तो फ्रेंड कोन कोन देछि लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट. तो v रो मूल्य दे देछि फ्रेंड दैट मींस दिस इज द v आरएमएस वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू 220. फ्रीक्वेंसी रो मूल्य दे देछि फ्रेंड 50 हर्ट्ज. आरएमएस करंट रो भी मूल्य दे देछि फ्रेंड आई आरएमएस इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर्स. तापर से दला फ्रेंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अकर बिफोर 1/900 seconds से कह फ्रेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर. एवरेज पावर मूल्य आरसी सर्किट रे केते हबो मते पचारिछि ओके. चलो फ्रेंड डिस्कस करबा. तो फ्रेंड हमको से पचारिछि एवरेज पावर. वी नो फ्रेंड्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर. दिस इज v into I into cos phi. और यदि आरएमएस टर्म में लिखिबा फ्रेंड दिस इज v RMS मल्टीप्लाइड बाय I RMS into cos phi. तो फ्रेंड v रो मूल्य हम पाखरे अछि I रो मूल्य अछि ओनली आई नीड द पावर फैक्टर cos phi. तो फ्रेंड एटा बाहर करबा गेले खाली एक्स्ट्रा गोटे जिंस फ्रेंड आपण जानिबो जे द टाइम पीरियड for AC voltage is 1 divided by 50 seconds. फ्रेंड ये गोटे जिनस खाली आपको मन रखार अच्छी जे जोटा फ्रेंड आम पढ़ीने बट इन रिगार्ड्स हमको दरकार पड़ो टाइम पीरियड फॉर द एसी टाइम पीरियड फ्रेंड टू कंप्लीट वन माने वन एंटायर साइकिल आम पढ़ी टाइम पीरियड ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी. तो गोटे टोटाल फ्रेंड टाइम पीरियड को कवर करने एसी वोल्टेज को केते समय लगे 1 divided by 50 seconds. क्वेश्चन आमको देछि फ्रेंड केते आगर हो 100 seconds before अब कौन नहीं फ्रेंड. सो लेट मी कैलकुलेट द टाइम. दिस इज इक्वल्स टू या 50 लगुच 900 आगर हो फ्रेंड. सो 900 डिवाइडेड बाय 50 0 0 5 रे कले दिस इज फ्रेंड 18 ओके. दिस इज योर 18. नाउ फ्रेंड्स टाइम पीरियड इज 18. नाउ फॉर ए कंप्लीट साइकिल we need 360 डिग्री टोटाल फ्रेंड 300 आम जानी फ्रेंड कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री नेवार अच्छी. टाइम अच्छे आम पाखे 18. दैट मीन्स द फेज एंगल विल बी टोटाल कंप्लीट करिवार अच्छी फ्रेंड 360. आम पाखे टाइम अच्छी 18. तो गोटे मिनिट रे केते कवर करबा हमें 18 × 24 दिस इज 20 डिग्री. तो फेज एंगल फ्रेंड हमर हे गला 20 डिग्री. देन फ्रेंड चलंदो हमें बाहर करबा पावर फैक्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर. वी ऑल नो cos phi. दैट मींस दिस इज cos 20 डिग्री ओके. तो फ्रेंड cos 20 डिग्री वैल्यू तो मन रखा फ्रेंड मुश्किल बट जेहेतु फ्रेंड क्वेश्चन देछि मोड रे कैलकुलेट कर रखी फ्रेंड दिस विल बी 0.9396 ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर. नाउ फ्रेंड हमें बाहर करि परिबा एवरेज पावर विल बी इक्वल टू v RMS
multiplied by I RMS multiplied by cos phi. V रो मूल्य दे दी फ्रेंड 220, करेन्ट रो मूल्य दे दी फ्रेंड 10, cos phi रो मूल्य बाहर कले फ्रेंड आम 9396. तो फ्रेंड सब यदि मल्टीप्लाई करदे टाइम सेव कर दी. दिस इज योर 2067 वाट्स. तो फ्रेंड एवरेज पावर आप बाहर 2067 वाट. तो बाकी सब जिन तो बुझीपारे फ्रेंड. खाली गोटे जिन ये आप मन रखार अच्छी फ्रेंड. दिस इज द इम्पोर्टाट द टाइम पीरियड फॉर एसी. टाइम पीरियड माने फ्रेंड टू कंप्लीट वन साइकिल केते टाइम लगे फॉर एन एसी वोल्टेज 100/1/50 सेकेंड्स. हमको से कहला 900 सेकेंड आगे रही. तो 900 को 15 फ्रेंड आम 50 हरण करदे वी आर गेटिंग 18 मिनिट्स. तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल आम टोटाल एंगल होची 360 डिग्री. आम पाखे जो 18 मिनिट तो गोटे मिनिट रे केते करिवो फ्रेंड 20 डिग्री. सो फेज एंगल इज 20 डिग्री. पावर फैक्टर फॉर्मूला फ्रेंड cos phi. तो 20 डिग्री पुट कर देले. दिस इज द वैल्यू. तापर फ्रेंड सिंपल खाली फॉर्मूला रे मु याको पुट कर देली. So my dear student, with this we have completed all the MCQs regarding your basic electrical engineering. तो जहाँ भी previously question थिला फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रु टिके बाहर जदि फ्रेंड कोटा अटैच भी अच्छी से टाइप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फ्रेंड मुझे आपको सिखेली. ओके सो दिस इज द फ्रेंड कंप्लीशन ऑफ MCQ सीरीज ऑफ योर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. ओके तापर फ्रेंड 1 डे गैप रहिबो और नेक्स्ट फ्रेंड आम आप सब्जेक्ट स्टार्ट करवा जार ना होची बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स. ओके कारण फ्रेंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कॉन्सेप्ट सिमिलर अच्छी. जब इलेक्ट्रिकल पर इलेक्ट्रोनिक्स को जीवा आमको बुझा भी इलेक्ट्रोनिक्स सहज लगे. से फ्रेंड वी विल मूव ऑन टू बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स. ओके थैंक यू.